Yes, hello, Mr. Umar Rafiq Bhatt. Welcome on Jupiter platform, and let's start your thermodynamics time for your final JKPSC interview for the Yes, post sir. of Assistant Engineer in Public Works Department. Yes, sir. Sure, sir. Umar, what is thermodynamics? सर थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिस्टम की जो मतलब इंटरेक्शन रहेगी अपनी सराउंडिंग के साथ, और जो वो इंटरेक्शन रहेगी वो इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, और जो वो इंटरेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम पे और क्या इफेक्ट आएगा हमारे सराउंडिंग पे, जैसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएगी, तो वो सारा सर हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. दैट्स व्हाट आई कैन कंक्लूड सर थर्मोडायनेमिक्स इज. You know, some people they mention thermodynamics as the study of three E's like energy, equilibrium, and entropy. Yes, sir. Can you tell me brief about these three E's of thermodynamics and how Sir, they are yeah. associated, linked? Okay, sir. So first one is our energy that I already mentioned कि हम thermodynamics में पहले ही जो energy की interaction देखते हैं सिस्टम की कैसी रहेगी सराउंडिंग में, वो हम पढ़ते हैं in the form of heat and work. ठीक है सर. और second जो है हमारा equilibrium है. इक्विलिब्रियम में हम क्या देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं कि हमारा सिस्टम कब आएगा सिस्टम सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में, जैसे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, या वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. तो उस वो जो स्टडी हम करते हैं जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स में हम ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. और जो थर्ड वन जो है हमारा थर्ड वन है सर हमारा एंट्रोपी. तो एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं कि एक सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है या कितनी रैंडमनेस है सर, उसको हम एंट्रोपी से डिफाइन करते हैं. तो एंट्रोपी एक तरीके से हमें ये भी बताता है कि जो भी सिस्टम के पास एनर्जी है उस एनर्जी को हम कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम उसकी कितनी कर सकते हैं, वो एंट्रोपी डिफाइन करते हैं सर. अच्छा, एंट्रोपी की वजह से we lose energy or exergy? What we lose? सर एनर्जी एंड एक्सर्जी इज सर व्हाट वी लूज इज, मुझे ये लगता है कि डिग्रेड हो जाती है सर हमारी एनर्जी ना. बट एनर्जी को लॉस नहीं करते हम, एनर्जी लॉस नहीं होता. ये सर लॉस तो होगा ही सर, जितनी एंट्रोपी ज्यादा होगी उतनी तो लॉस होगी सर सराउंडिंग में. बट एनर्जी तो कंजर्व्ड है, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. तो एनर्जी को हम यस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी लॉस? सर लॉस ये मतलब है कि जैसे अगर हमारा सिस्टम कोई भी सिस्टम है वो किसी टेम्परेचर पे हमने उसको फिक्स कर दिया सर, उसको हीट दे दी और उसका टेम्परेचर हमने रेज कर दिया, तो उस टेम्परेचर रेज की होने की वजह से वो अपनी कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट को दे देगा, क्योंकि सर ये तो ऑब्वियस उसमें जो भी डिसऑर्डरनेस है रैंडमनेस हम क्रिएट करेंगे उस डिसऑर्डर एनर्जी एनवायरनमेंट में यूज मतलब लॉस ही करेगा, उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते. हम कितना भी उस पे मतलब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें लेकिन वो हमेशा लॉस मतलब वो हमेशा लॉस में ही जाएगा सर. Umar, you are comfortable in drawing some thermodynamic cycle? यस सर. Can you quickly draw a thermodynamic cycle on TS and PV diagram? I am giving the processes. Okay. ओके सर. Suppose first the isobaric expansion is taking place. वन सेकंड सर. पीवी एंड टीएस 1 to 2. 1 to 2, you can represent a process like 1 to 2. Just first note it down the process, then you can draw a PV and TS diagram. Okay, so 1 to 2 process is isobaric expansion. Okay, sir. Then constant volume heat rejection. Okay. 2 to 3. 2 to 3, and then 3 to 1 is the last process, and that is the isothermal heat rejection. Kindly this one 2 to 3 was constant isothermal heat rejection. Isothermal heat rejection, sir. Okay, sir. सर सेकंड वन आई कुड नॉट सर, मैंने वो नोट ही नहीं किया सेकंड वाली जो प्रोसेस आपने बताई थी. सेकंड वन सर कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके सर. इज दिस एक्सपेंशन और कंप्रेशन सर, व्हाट इट इज? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. ओके सर, हीट रिजेक्शन. Do I need to show them on PV and TS both or only TS or PV? Both quickly. Okay, sir. So this is on PV.
This one, sir. And TS, sir. 1 second. 1 to 2 is my isobaric. Achha, during the Yes, sir. isothermal process, you represented pressure is increasing. So how the pressure can increase? That is a heat rejection process. Isothermal heat rejection, na, Umar? Sir, it's a cycle. I am representing it on a cycle. Fine. So you can check like whether that cycle is possible or not. I have given you some case. Yes, sir. Sir, heat rejection What isothermal like heat. the first there is yes initial the first process I have given you what like the constant pressure expansion. Yes, sir. Then It will be. constant volume heat rejection, and the third one is isothermal heat rejection. Yes, sir. So is Sir, it from right? 1 to 2, it will be a horizontal line on PV. Fine. If I represent the pressure axis on the on y-axis and volume on x-axis, then it will be a horizontal line. Then constant volume heat rejection will be a vertical line, sir, passing from top to bottom. Okay, sir. And this heat rejection will be from 3 to 1. That will be pressure. My pressure will decrease and my volume will also decrease, sir. Pressure volume both will decrease. No, sir. Volume will decrease and pressure will increase. Sorry, sir. Achha, volume will decrease and pressure will increase. Why? So, sir, because in isothermal process, pressure and volume are inversely proportional to each other, sir. That's why if volume is decreasing, then pressure will increase, sir. Achha, it's a heat rejection process, no? Yes, sir. So work will be done by the system or work will be done on the system? Sir, if it's a heat rejection process, then it will be on the system, sir. Work will be on the system. Yes, sir. Means the way you have shown that is right. Means some kind of compression is going to happen. Yes, sir. Fine. Go ahead with the TS diagram also, Umar. Okay, sir. So please give me some time, sir, so that I can. Sir, from 1 to 2, it is an isobaric process, and from Just 2 show to to me. Just show to me, Umar. Sir, I cannot connect this, sir. 3 to 1, sir. Heat rejection. Sir, it's not possible, I think, sir, this cycle. Just show to me. 1 to 2 is isobaric. Yes, sir. Sir, its slope will be 2 to 3, lesser than 2 to 3 constant volume. Yes, sir. It's sir both मतलब जो 1 to 2 प्रोसेस है ना सर हमारी, ये आइसोबारिक है. इसका जो ये हमारा रहने वाला है स्लोप, वो सर कम रहेगा as compared to the 2 to 3. Then what is the problem? First show the constant pressure line on TS diagram, then show the constant volume line, and just join by horizontal line because the process is isothermal on TS diagram. What's the problem? So The one point is third process 3 to 1 is isothermal, na? Isothermal heat rejection. Yes, sir. So entropy will decrease because it's a heat rejection process, and the Yes, temperature will remain constant. Nahi? yes, sir. Yes, sir. Just show to me if you have drawn. So I'm little bit confused about it. This heat rejection and two processes, both are the heat rejection process. I can't conclude it, sir. In both the cases, entropy is going to decrease. What is the problem? During process 1 to 2, the constant pressure process, the entropy is going to increase. Yes, sir. But next two processes, constant volume heat rejection and isothermal heat rejection, in both the cases, entropy will decrease. But the difference will be what? During constant volume, the entropy change will be very less. Slope is higher, and at constant temperature, you will have a horizontal line. Yes, sir. You're not getting the idea. No, sir. I'm a little bit confused about the last one, sir. How can we connect the third point to the Just, first one? just draw a horizontal line first. Yes, sir. Done, sir. Okay. Just add, just draw from the left end of that horizontal line.
draw a constant pressure process, Yes, sir. and the point where that process, constant pressure process is ending, that point you need to join to the next last end of that horizontal line. Like this, Getting the sir? idea? This one. Nahin. That's what But I'm just confused. the line which you have drawn, the constant volume line, it will cut the middle of the line. Okay. Which, okay, sir. मतलब The जो horizontal line, isothermal है, the उसके बीच horizontal में line, जाएगी. yes, the horizontal line which you have drawn, just take middle of that, for example, Okay, sir. middle or very maybe 1/3 part. Okay, join that with the 1 to 2 presses. Just join that point with the point number 2. Okay, sir. I think you are having confusion in drawing the constant volume line on TS diagram. You are not aware about constant volume line on TS diagram. It's a curved line. It is मतलब ये तो parabolic है ही, मतलब inverse वाला इसमें It is very relation similar बढ़ to गया. constant pressure line, but the slope of Yes, sir. But the slope is will be constant higher volume line than is the higher. So you can constant check it here. You can check it here. The slope of constant volume is coming out more. Have you drawn, Umar? Just show to me. So constant pressure is like this, sir. What I am getting is all about it. Why you are taking middle of both? Actually, just where is the point 2? Where is the point 2? So On it will TS be. diagram. On TS diagram. So this is my point 2. Point Upper 2. one. Yes. So this point 2 you need to join with the middle of the horizontal line. Like Join this this one. point. Yes. Just no. Why you are drawing straight line? Just draw a curved line like the constant pressure. Why Like in that left direction? Draw in the left direction, not in right direction. Yes. this one, sir. Yes. Extend. Yes. Further extend. Yes. And cut it here. Cut the horizontal line. Yes. This is the point. Yes, This is the point. Okay, sir. You can check it here. The slope of constant volume is more. Now getting the three processes, Umar. Yes, sir. Umar, what is second law of thermodynamics? Sir, the second law of thermodynamics, it basically have the two statements which were given by the Kelvin. One is my Kelvin-Planck statement, which deals with the heat engines, and second one is my Clausius statement, which deals with the refrigerators. The first one states that we can't create an heat engine. मतलब हमारे पास एक हीट इंजन ऐसा नहीं होगा जो पूरी की पूरी जो हीट हम उसको सप्लाई करेंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा टोटल वर्क में. That is PMM2 is not possible by the Kelvin-Planck statement. And by the Clausius statement, it states that we can't transfer the heat from the lower temperature to the higher temperature unless and until we do some work or provide some work to the system. Hello, sir. Am I audible? Yes. Hello, Umar. Yes, sir. I think there was some internet interruption. Huh? Internet issue was there. It's okay, sir. Now I think you are able to listen to me. Huh? My voice Yes, is sir. clear. Yes, sir. Yes, sir. Voice is yes. Fine. Umar, what is principle of increase in entropy of universe? Can you tell me something about the principle of increase in entropy of universe? So it states that the entropy of universe will always tend to be a maximum. It will try always to be the maximum. What is irreversibility? What do you understand by irreversibility? Sir, irreversibility actually defines, अगर मैं इनको मतलब simple words में बताना चाहूँ कि irreversibility है क्या, कि basically मतलब हम ये दिखाते हैं कि एक system में हमारे पास कितनी available energy है, जो बाकी energy है वो सर किसकी वजह से lose हो रही है, वो irreversibility की वजह से lose हो रही है. अब irreversibility कुछ like that of the friction, अगर friction मतलब present है system में, तो उस friction की वजह से कुछ ना कुछ loss होगा हमारी energy में जो भी हम provide कर रहे हैं system को. या दूसरी मतलब बाकी सारी जैसे हमने हीट उसको दे दी, हीट की वजह से रैंडमनेस आ गई सर,
दैट इज द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, दैट मींस ये अपनी एनर्जी को और लूज करेगा सराउंडिंग्स में, तो उसकी वजह से और इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और तीसरे तरीके से अगर मैं सेकंड तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँ, इरिवर्सिबिलिटी ये एक सिस्टम की ये है कि अगर मैं एक सिस्टम पे कोई प्रोसेस कर रहा हूँ और उस प्रोसेस को अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ, जो भी मैंने अभी तक काम किया है सिस्टम पे, अगर मैं उसको रिवर्स करना चाहूँ, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबिलिटी यही बोल रही है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो गया है, मतलब वो सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट उसने डालना ही डालना है अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे। Umar, my last question to you: what is second law efficiency? So second law efficiency is basically the ratio of the actual efficiency of a system divided by the isentropic efficiency or the Carnot efficiency of the system. It's a ratio of two efficiencies, sir. So fine, but by through this you will be able to define the second law efficiency for a work producing cycles only, maybe some kind of heat engine. How Sir, will you define nahi, sir. second law efficiency for a heat exchanger? Heat engine, sir. Heat exchanger. Exchanger. So second law efficiency for heat exchanger will be the actual heat transferred, और उसको हम सर I think effectiveness से denote करेंगे वहां पे. So effectiveness is similar to second law efficiency. यस सर, क्योंकि वहां पे भी मतलब इफेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं कि जो हीट ट्रांसफर सिस्टम में हो रहा है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो होना चाहिए। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर एक सिस्टम में, एक हीट एक्सचेंजर में कितना पॉसिबल है, उसको तो हम मतलब जो इफेक्टिवनेस को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो हो रहा है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो सिस्टम मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर में होगा। और सेकंड लॉ एफिशिएंसी भी वैसे ही डिफाइन होती है सर, एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। उमर, एक्चुअल में हम इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द एक्सर्जी यूटिलाइज्ड बाय एक्सर्जी एक्सपेंडेड इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस, मींस हाउ मच वर्क पोटेंशियल यू आर हैविंग एट द end of the process divided by how much work potential you are having in the beginning of the process. ओके सर। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि कितना वर्क पोटेंशियल हमने लॉस कर दिया. You know how Yes, much the work potential which you are having at the end of the process, that is nothing but the work potential which you are having in the beginning minus the work potential which we lost. yes sir. So that second law efficiency is nothing but 1 minus irreversibility, because the work potential which we are losing in a process, that is nothing but irreversibility. Okay, so second law efficiency is nothing but 1 minus irreversibility divided by exergy which we are having in the beginning of the process. Okay sir. So second law efficiency will be 100% for a reversible cycle. अच्छा, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक लग रहा है उमर? आपका आप कंफर्टेबल थे, हालांकि एक जगह आप नर्वस हो गए जो साइकिल वाला पार्ट था. Yes बाकी sir, आपका cycle. टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है थर्मोडायनेमिक्स में. Yes sir. तो रिवाइज करते रहो. एज सच मेरे को कोई मेजर इशू नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है. सब्जेक्ट Yes नॉलेज sir. इज फाइन, यू आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन वेरी राइट वे, राइट डायरेक्शन. Yes थोड़ा sir. सा कंफर्टेबल रहना. इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल एनी पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे आपको अपना कामनेस शो करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है. यू नीड टू Yes sir. listen to the interview. If you are getting, it's fine, otherwise you can mention I will get through sir, I will this time I am unable to record. नर्वस नहीं होना है वहां पे, ठीक है? तो इफ यू फील अगेन यू कैन जॉइन मी उमर. मेरे ख्याल से आज आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चंस यू आंसर्ड, और जो नहीं कर पाए थे दोस आई Yes sir. ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. ओके, Yes sir. further if you face any doubt or if you want to discuss with me, you can shoot your query to WhatsApp. Okay sir. Thank you sir. Thank you so much. Okay, but good luck and best luck for your final interview. Thank you sir. Thank you so much for it.